Hi guys, good evening. Oh man, how are you? Yakul, how are you doing, man? Very well, very well. Good to see you, man. I've been just running helter skelter like a dog. कभी इधर कभी उधर भागे जा रहा हूँ. I've got a meeting at 6:30. I thought I didn't get time in the morning, so I managed to get some gym now. So Okay. having a glass of water, I'll sit and have that. How are you doing? कैसे चल रहा है progress and all? बढ़िया है. I have a problem with the motion. इतना पास नहीं हो रहा. Once in a day it happens like little bit. It happens randomly. ऐसा नहीं कि सुबह हो, afternoon, evening, anytime. कितना खा रहे हो खाना दिन में? Zero ना? जूसिंग पे ही हूँ मैं तो. हाँ तो खाना zero है ना? जूसिंग 2 सुबह नारियल पानी, फिर दोपहर तक 1 लीटर मौसमी जूस हो जाता है. आफ्टरनून में another half a liter कैरेट एंड बीटरूट जूस, फिर वाटरमेलन हाँ. जूस. और रात को भूख लगे तो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ, नहीं तो नहीं, कुछ नहीं खाता. मतलब जूस एज इन लाइक. Are you sure? हाँ हाँ. Input कितना हुआ solid food का? Zero. Around 3.5 liter to 4 liters. Solid food input कितना हुआ? Solid zero. Output कितना हो रहा है? Output very negligible. तो why you worried? कुछ तो निकल ही रहा है ना? हाँ नहीं नहीं, वरीड नहीं हूँ मैं ये मतलब इज इट लाइक नॉर्मल? It's very क्लींजिंग normal. हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब मेरा वो था. हो रही है. But what you need to do now is do side twisting exercises. ओके. Twists आते हैं, गौमुख आसन, जितने भी आसन होते हैं ट्विस्ट वाले, वो करो. उससे इंटेस्टाइन खींचेगी. Let me take this water and explain to you. ओके. When you do these asanas, the intestine gets stretched. कभी गुब्बारा फुलाया है? हाँ जी. कैसे फुलाते हैं? मुंह से. उसको ताकि आसानी से खींच. फूल जाए, उसको खींचते नहीं है. राइट. अगर खींचेंगे नहीं तो नहीं फूलेगा. राइट. सो व्हेन योर इंटेस्टाइन्स में कचरा स्टक है, उसको जब तक खींचोगे नहीं वो रिलीज नहीं होगा. सो ओके. व्हाट यू नीड इज स्ट्रेचेस वन. इसलिए कहते हैं एक्सरसाइज करना चाहिए व्हेन यू आर रनिंग, जिमिंग, एक्सरसाइजिंग. जस्ट गिव मी 1 minute, लेट मी फिनिश दिस वाटर, बिकॉज पानी धीरे धीरे पीना चाहिए वर्कआउट के. गिव मी 1 second ना. ठीक है. आपको एक तो जूस पी के वज्रासन में बैठना होता है ना. वज्रासन हाँ, से क्या होता वज्रासन है? में बैठा नहीं जाता क्योंकि काफी साल पहले मेरे को नी इंजरी हुई थी, तो उस नी पे काफी ना दर्द होता है जब मैं बैठता हूँ. हाँ तो अभी तुम्हें यू हैव टू डू दी आसन. आसन जैसे वज्रासन होता है, वज्रासन से ये आंतड़ यहाँ से खींचती है. जब ये खींचेगा तो रिलीज होगा. अंडरस्टैंड? तो स्ट्रेचेस करो आराम से. दूसरा चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट is, have you started your enema or not? नो, नॉट येट. So what you need to do is start off with the enemas, because enema, if you go to any health center or any naturopathy center, enemas are the first thing that they introduce in the morning. राइट. Okay, so it is not it is very easy actually. इसमें कुछ ज्यादा I have सोचने done वाली it. I बात have नहीं done it है. earlier. I'll do it tomorrow. I'll start from tomorrow. Should I do it Do every it day or now. like once is Do it enough? now. अभी आर यू फीलिंग लाइट कि मन कर रहा है दुनिया बदल दूं, या लग रहा है हैवी हैवी? नहीं, I'm बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं, मतलब I'm absolutely fine. I'm comfortable. You can, if you are free, do one now also. You can do one in the Okay. morning also. कई लोग दिन में दो दो बारी भी करते हैं अभी, क्योंकि इंटेंस क्लेंस चल रहा है. Right. So start off with the enema right now. Just make sure it is filtered, clean, warm water. Okay. Tap water मत डालना. And you are a kapha body, you said ना? Yes. तो पित्त कितना है? Pith is 19. हाँ तो add some lemon, नींबू. Okay. जस्ट निचोड़ो some fresh नींबू, not too much, just half. 1 लीटर में Okay. आधा नींबू निचोड़ लो. नींबू इज अ वेरी गुड क्लेंजिंग एजेंट. दैट विल गो इनसाइड. डू इट नाउ, क्योंकि कभी कभी इमीडिएटली निकल जाता है, कभी कभी 1-2 घंटे लगते हैं पानी बाहर आने में. तो Okay. ताकि रात को नींद डिस्टर्ब ना हो. डू दैट ठीक है. नाउ एंड डू इट इन द मॉर्निंग ऑल्सो. So Okay. let that mobilize it, and I will tell you what. Don't share the pictures, but when you look outside in the pot, you will see a lot of black buck. Okay. Yeah, So that don't share. happens. That happens with anema. Don't share the pictures. Yeah, obviously not. Okay. So ठीक है जी. start off with your enemas right now, and you will see a radical change. And one thing more you need to do is शाम को सोते वक्त put some जीरा.
जीरा होता है ना, ओके। जीरा। हाँ जी, हाँ जी। तो पानी, 1-2 चम्मच जीरा और अजवाइन भिगो हाँ दो हाँ। पानी में, निवाए ओके। पानी में। वेन यू भिगो द जीरा एंड अजवाइन इन निवाया पानी, वो रात भर में वो डिजोल्व हो जाएगा। सुबह ऊपर ऊपर को पानी पी लेना। हेलो। सुबह ऊपर ऊपर का पानी पी लिया जाए। अब हाँ, वो पानी पी लोगे ना, पानी पी के भी ताड़ासन करोगे, तो वो अपर ट्रैक, जितना भी डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो साफ करता जाएगा वो। ओके, ठीक है जी। ठीक है। गैस का भी काम खत्म हो जाएगा। if there is any gas in the body, all of that will get released. So I'm telling you two things, Yakul. One, enema for the lower intestine, and for the rest of the digestive tract, you are taking जीरा एंड जीरा अजवाइन का अजवाइन पानी। का पानी। ठीक है, 1 1 स्पून टीस्पून ऑफ ईच। Hello. Guys, hold on. Let me go to a better zone. Excuse me, where do I get a better Wi-Fi? Wi-Fi. Yakul, uh, by the time Better the Pankaj Wi-Fi. is coming Just 1 second. No, where is the better? Where is, back, there's no signal here. for a second I thought Hello, Saif Ali 1 Khan, second. what Hold is on. he Huh? doing here? I'm going inside the hotel. Just 1 second. Please hold on. लवलीन जी, यू आर सेइंग समथिंग, आई गेस। Yeah, I was saying that for a second when I saw your side post, I was like, what is Saif Ali Khan doing here? Seriously, I'm Am I not audible joking. now? Yeah. You get Wi- सो पंकज भाई, यू देयर? Now I सच्ची में can किसी you ने hear me बोला now? नहीं आपको? Yeah. Yeah. Yes. So I Is it was asking, better? 1 teaspoon of each is enough? या कितनी Yeah, क्वांटिटी yeah. डालनी है 1 glass में? teaspoon. I need to just take 1 teaspoon of जीरा, 1 teaspoon of अजवाइन। जीरा भी ले सकते हो, सौंफ भी ले सकते हो। अजवाइन, 3 आइटम बहुत फायदे के हैं। अजवाइन, जीरा, सौंफ। आज कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन डालो, कल दूसरे कॉम्बिनेशन का डालो। कीप चेंजिंग इट, बिकॉज एक चीज से बॉडी एडिक्टिव हो जाती है एंड स्टॉप रिस्पॉन्डिंग। Right. Understand? So you take a different combination, and once you take a different combination, it will help in the cleansing. ठीक है जी। So you start off with that, and enemas are very important. Okay, okay. Thank you. Okay. But tell me after 2 days how it feels, because we don't have a session tomorrow and day after. अगर कोई Okay. प्रॉब्लम होगा ना बिल्कुल मुझे फोन करो आप। If I miss ठीक। your call, मैं 1-2 घंटे में कॉल बैक करूंगा। ठीक है जी, ठीक है। Thank you, thank you. Cheers, brother. Cheers. Okay, we have any questions, Loveleen Gurreja? Yes, sir. Hi, hi. How Okay. are you? Good. I'm feeling Okay, I'm losing you now. Why am I much losing better, you? but the only problem that I'm facing, okay, today after so many days, today I'm like totally running to the washrooms again and again. So I'm getting lots of up Cleansing, भी हो रहा है, cleansing. down भी हो रहा है, तो Don't give cleansing me हो रहा है detail. अच्छा खासा. Cleansing, cleansing. Yeah, let it happen. Okay, cleansing हो रहा है. Now the only problem is the pitta. My body is still getting a lot of inflammations in between. Like you could see a lot of rashes here. I'm having a lot of rashes on my hands also again, legs also. That is not going off, and I'm not taking my medicines. So No, no, medicine की कोई जरूरत नहीं है. I don't remember the background. What's your Prakriti? Where are you from? I just but forgot then everything. I can't keep itching my body also. No, the skin will get cleared with the intestine. I forgot your background. What was your protocol, Preeti? Sorry, Loveleen. Pitta is very high, so it's about 54, 55, and 30 is kapha and rest is. So what was your protocol? I'm supposed to juice and I'm supposed to eat raw during the day whenever I feel like. हाँ, so continue that. उसमें तो कोई मुश्किल नहीं हो रहा होगा. I no, that I'm doing. That is absolutely fine. Now the skin का जो भी The only issues thing है is, ना. what do I do about this itching? Because you've told, I mean, I'm avoiding medicine. Issue ये No, होता है ना avoid. फिर, how am I going to keep itching out? Are you having Ashgard juice in the morning? I tried once, but again, it causes a lot of bloating. I mean, Ashgard नहीं होगा. Ashgard कौन सा ले रहे हो? जो सफेद पेठा होता है, एकदम ठंडा सफेद, होता है शरीर के लिए. हाँ, लेकिन मुझे सूट नहीं करता वो शायद. I'm also an ulcerative colitis patient. Ah. Listen, I'll tell you what, you'll have to give it some time, Loveleen. This thing won't go overnight. When you're curing yourself आवाज क्या? naturally, the process takes time, Mhm. right? So you'll just have to give it more time. Let's watch it for another 3 days, but it will subside, is what I'm trying to tell you. This thing won't go overnight. Right. I mean, I agree. ठीक है, okay. But how old is this problem? 95. So it's like
long back. 30 years ना? Yeah. हाँ, तो 30 years की प्रॉब्लम को 30 दिन तो दो उसको जाने में, टाइम लगेगा थोड़ा, लवली. ठीक है, done है. But don't worry, you're on the right Thanks. track. If you're eating raw and juices, the system is getting cleansed. I also suggest you start off with enemas if you can. That's going to be helpful for you. Okay, we'll try that. ठीक है. और दूसरा, other thing, have you ever done kunjal kriya? No. ठीक है. Since you are eating, I recommend you do kunjal kriya also. Google करना kunjal kriya, which means drinking water. Mm-hmm. 2 लीटर पानी पीना होता है निवाया, और उससे फिर उल्टी करके निकाल देना होता है. So your upper digestive tract will also Okay. start getting cleansed. All right. I'm not losing weight. That's okay. That's Only okay. that's okay, no? That's okay. It'll go आराम से. The body But will yes. stabilize. Something कभी-कभी blockage होता है, वो अचानक निकल के अचानक किसी दिन 3 दिन में 2-3 किलो ड्रॉप हो जाता है. ऐसा भी Oh. होता है. So don't worry. Let it continue. Have patience. This is naturopathy. It's a slow process, but it's a very good process. Right. I'll do that. Thank you. Thank you. Who else do we have? Anyone else for any calls? Yeah. Hi, Pankaj. Shobha, hi, how are you? Good. How are you? I'm doing very well. Tell me. This is day 8 today. Yeah. Until yesterday, I've lost 7 pounds, but last 3-4 days, no evacuation whatsoever. Yeah. So just I think today is sorry. the day for enema. I think today is the day for enema. Everyone's got the same thing. कभी-कभी अटक जाता है. Have you tried the enemas? No, यहाँ पे ना जैसे फार्मेसी में मिलता है like a small saline bottle. No. Not useful. You need to order it on Amazon. You get a kit. It's a 1 Enema liter kit? bottle. Yeah. तो वो the liquid comes in the bottle, is it? No. You just have to put your own water, filter water. Acha, say filter water, warm water you said, right? To someone? Yeah. Just water, clean water. You don't need any liquid. You can put your own water as much as you want. Enema kit, okay. Okay. ठीक है. मैंने LSP तो जब भी आपसे बात की थी तभी बंद कर दिया था, 3 दिन किया था. Again, there was no evacuation. So I stopped that. I'm still on juicing. And I'm doing fine. कोई problem नहीं है, energy levels में कोई दिक्कत नहीं है. But there's no evacuation and it's a very slow process. Right now I've lost 7 pounds. And how much overweight are you? 7. हाँ How जी. overweight are you? So I am 4'10". I don't know how I think 50 pounds I'm overweight according to my height. 50 pound overweight हूँ मैं. आप continue करो with the same protocol. And हाँ जी. what you can also do is evacuation को boost करने के लिए you can start the castor oil. Have you started it? ना. तो आप castor oil ले लीजिए market से, some organic castor oil. Just have Yeah. 2-3 spoons of castor oil in the morning and gulp it down with warm water. अच्छा. The moment you do that, castor oil with warm water, it will clean the system from the inside. It will induce some little अच्छा. bit of loose motion, so that will clean you. Okay. And how long should I do that? आप करो, do it. This is SOS. This is not mandatory कि daily करना है. Whenever you are feeling a little heavy, do it in the morning. उससे body साफ हो Yeah. जाएगा. हाँ, I'm not feeling heavy or anything और discomfort भी नहीं है. तो आप मुझे कितने दिन तक do you think I should do it? Or I think do it for 3 days. 3 It days. is just a few spoons of castor oil, and after the castor oil, you're having water, and then you're going back to your normal process of juicing. So उससे ये होगा कि castor oil body reject कर देती है. It does not get digested. The moment it goes inside the castor oil, it has to come out. Okay. It's got a very bad taste, but it comes out, है ना? तो वो 2-4 घंटे में बाहर आ ही जाता है वो. So अगर वो बाहर आ जाता है तो इसका मतलब पूरा path clear करते आता है वो. अच्छा, okay. So when I see that coming out, I stop. Is that what you're recommending? No, you just have 2-3 spoons and have water and go back to your normal schedule. उसके बाद वॉशरूम जाना पड़ेगा 1-2 बार and that's it. कुछ में कुछ करना नहीं. फिर do it every day in the morning. That's it. 3 दिन Very. तक. हाँ, 3 दिन से ज़्यादा मत करो अभी. Try it for 3 days and after 3 days keep it SOS. Once in a week, twice in a week, whatever.
But you continue with your protocol because you're 50 pounds overweight, you've lost only 7 pounds. So let's aim to do at least in the next 2 weeks, till the 21 days are over. Let's aim to get at least 15 pounds off, ना? अभी 7-8 Yeah. pound और जाने दो. हाँ. Okay, ठीक है. You will be Sounds good. Yeah, thank you. I know. Thank you. I'm in good hands. I appreciate it. Thank you, ma'am. Are we done? Anyone else? Hi, guys. Hi, everyone new is here. Anu is new. Yeah, Deepak seems Pankaj, new. hi. Hi. Hi, Anu. How are you? Mine is only day 1 today, and Congratulations. Must be horrible. so far so good. But yeah, I'm having little headache. So working from home today, so able to manage. But tomorrow I'll be going to office. So let's see. अनु देख पहले 3 दिन बहुत मुश्किल होते हैं. Yeah. Okay. So you just have to count the 72 hours. The secret is Okay. stay busy. Stay busy. Okay. Yeah. That's Double what I'm काम doing. करो. Double. Whatever you're working, work extra. If some friend comes over, cook. खिलाओ दूसरे को. कहना मैं नहीं खाऊंगी. तुम्हें खिलाऊंगी. ठीक है? Okay. Read Yeah. a book, follow a hobby, listen to music, go out, come in, be busy. Just stay busy. Sure. Increase your workload. ठीक है? That is my mantra. I'm running this call in the midst of business meetings, in the midst of gyms, in the midst of traveling. I did the morning call on a flight. The moment I boarded, I had another business call during a security check. You have to be busy. I'm not doing fasting. I'm just doing OMADs. So आज कुछ नहीं किया. And अभी शाम को party है. So I'll go there. I'll meet my friends, do some business, and eat a little. Come back home. कल फिर fasting कर लूँगा. लेकिन मैं जैसे ही मैं खाली होता हूँ ना अनु, I go bonkers. You know. So it is important. You can't fast when you're free. Correct. I think it's very important to keep yourself busy. Yeah. Very busy. I'll keep you posted after 3 days how it is. Yeah. Yeah. Tomorrow we don't have any session, and day after might be difficult. So next session is on Saturday. But if there is Okay. any major problem, call me. I might miss your call. I will call you back within 2 hours. Sure. Thank ठीक you. है? और Yeah. कुछ मत सोचना अभी क्या होगा, चक्कर आएंगे, भूख लग रही है, क्रेविंग हो रही है, दुनिया खत्म हो गई, ये छोले भटूरे खा रहा है, वो बटर चिकन खा रहा है, घंटा Yeah. कुछ नहीं है, 21 दिन बाद सब मिलेगा कुछ. ठीक है? डोंट थिंक, जस्ट Yeah. सैक्रिफाइस. इट्स अ सैक्रिफाइस. किसी ने Right. तुम्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में लॉक कर दिया है अभी. ठीक है? Correct. क्या करोगे? क्या करोगे? बाद में क्या कुछ नहीं कर सकते है ना. तो ये Yeah. तो वॉलंटरी है, ये तो आपने अपने आप को खुद बंद किया है. और इसका रिजल्ट तो ये है, इफ यू टॉक टू पीपल इन द ग्रुप कि इन्होंने 8-8 किलो ऑलरेडी लूज कर दिया है. इफ यू स्क्रॉल who Yeah. started 11 days ago, they have lost 8 kilos. Imagine you are in that situation after 11 days, you've lost 7-8 kilos. You're saying, oh my God, wow. I Yeah, said, I'm looking everyone forward to unmute. that. I want everyone to unmute and say yes when I will make a statement. If you agree, you say yes. Unmute everyone. Every Yes. day, please make Yes. sure you get some sunshine. Sunshine. Yes. 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 Understand? No. Yeah, you No. have No to. sunshine. Why no Yes. sunshine, Dina? There's no sun. There's no sun in UK. I know. So bad luck. So you go back to mute. Yeah, So sunshine is so important, Dina. Sunshine is so important, Dina. Life revolves around the sun, you know, and we are as good as any other plant or animal. So please make Yeah, but- sure you expose yourself as much as to the sun during sunrise and sunset. Absorb the sun in the skin. If you've got a wound which takes 2 days to heal, in the sun it will heal in a day. Understand? So Pankaj, we sun don't is see magic. sun for 4 days, 5 days. You know that. I know, I understand. I pity you for that. But the rest of the people who get sun, they should expose themselves. But at least you've got clean air, Dina, in the UK. Yeah, So debatable. we don't get clean air. What do we do? Right? And that's our lovely friend Naresh having a sip of his juice. It is a delight to see your friend. Cheers, cheers, cheers. You're rocking, I'm Naresh. having I'm having sugarcane juice. Arey, cheers, cheers. Look at this. I want the two of you to click a nice selfie with your sugar cane and post it on the group for everyone. And will Okay, sure. everyone give a thumbs up to this lovely couple? What a lovely, lovely picture there. Look at the two of them. Right? Sure, ठीक है? sure. So you will be good. Anu, Anu, I Yeah. need to spend 1 more minute with you. आप समझो इस बात को, आपको अभी जो भी ओवरवेट प्रॉब्लम्स है ना, Yeah. वो आगे जाके और तकलीफ देगी. वो हमको नहीं चाहिए. Yeah. We want to solve it now. Okay? And we want to be healthy. Correct. And every time we meet someone, we don't want people to look at as a normal guy. They say, wow, man, you look cool. उसका एक किक है, मजा है, जोश है, you know, वो हो जाएगा.
आपका एक दिन में नहीं होने वाला, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन 21 दिन में मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी लाइफ इतनी बदल जाएगी दैट यू विल डू इट अगेन आफ्टर फ्यू डेज, एंड धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट 3 months यू विल बी अ डिफरेंट ह्यूमन. Visually great, but internally you will clean. So anything related to the heart will be sorted. Any blood pressure, diabetes issues will be sorted. The skin will start glowing, right? And you will be very good. So Looking forward please to that. continue. Touch wood. Right now, I don't have any such ailments, but hoping by अभी doing this मुश्किल in होगी. future, I don't attract anything. Yeah. 3 days will be difficult. Yeah. Okay. Any other questions? Right. We done? No, hi Pankaj. Hi, Uh, Pretty Goel. Hi, PG. Yeah. Pankaj, so you had told me to be on 9 days fast. I thought I can be a little ambitious, but I'm just worried because we won't have calls for next 2 days. My 9 day gets over tomorrow technically. What if I want to start eating maybe on the 10th day? You told me to do 9 days. I'm 55% Vata, 38% Pitta, and the 18% is Kapha. So how do I move across to eating? What should be my next No. step? No. Are you overweight or are you sorted out? Perfectly fine. No. I need to lose 4 more kilos. I've lost 2 kilos so far. हाँ तो कंटिन्यू ना, if you have the stamina है तो कंटिन्यू करो, उसको क्या प्रॉब्लम है? 9 दिन के 12 कर लो. मन कर रहा है खाने का. नहीं, मन कर रहा है या मर रहे हैं? नहीं, मर तो नहीं रहे, but Can you just stretch it by? Okay, so I'll tell you what. You finish 9 days of juicing. Are you only on juicing or are you juicing and raw? only juicing. Oh, lovely. No problem. 9 days over होने के बाद you do 3 days of juice and raw. And what is raw? रॉ मतलब सुबह उठा, जूस पिया, जूस पीने के 1 घंटे बाद भूख लगी, 2 आम खा लिए, 2 आम खाने के 3 घंटे बाद भूख लगी, 10 ककड़ी खा ली, 10 ककड़ी खाने के बाद 3 घंटे बाद भूख लगी, सैलेड खा लिया, फिर प्यास लगी, जूस पी लिया, फिर भूख लगी, पपीता खा लिया. सो यू आर ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हैविंग जूसेस टू योर हार्ट्स कंटेंट, जितना मन करे. Salt? सॉल्ट पिट में हाँ थोड़ा सा डाल लो सैलेड में, Okay. ककड़ी के साथ अच्छा लगेगा. Okay. 3 दिन दबा के सब्जी खाओ, दबा के. आई वांट टुडे ऑल ऑफ यू गाइस आफ्टर दिस कॉल टू पिक पिक्चर्स ऑफ योरसेल्फ हैविंग द जूस. आई गॉट शोभा अग्रवाल having a juice. I want a picture of Shobha with the juice. Cheers. A picture cheers with this juice on the group. Okay. So what I'm saying, Preeti, 3 days when you do the fiber and vegetables and fruits, it will go in the system और पेट भर के खाना है, उसमें कमी नहीं करनी है. Okay. पेट भर के खाओगे तो इतना गोल्डन रूल याद रखो कि कच्चा सब्जी और पके फल जितने शरीर में जाते हैं 100% वैसे के वैसे बाहर निकलते हैं साफ होके. Okay. सो नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, कभी बर्तन मांजे हैं? हाँ. बर्तन झामे से रगड़ते हैं ना उसको यूं. हाँ. अभी उसको पूरा सुखा दिया है, वो कचरा लूज हो गया है, थोड़ा निकल गया है. अभी आप फाइबर डालोगे तो झामे से साफ होता रहेगा, वो निकलता जाएगा. यू लूज मोर वेट. Okay. ठीक है. एंड आफ्टर 3 days of raw is over, on the 4th day we'll start 1 cooked meal a day. Okay. Your favorite food will be allowed. ठीक है. हाँ. Okay. Thank you so much. My pleasure. Anyone else? We done? ठीक है guys, please send pictures of yourself having the juice or the juice. Share pictures, motivate others. And I'm always a call away. Dina, my friend, you want to talk? No, I'm good. Everything's going well. Yeah. Lovely. I am so happy. Dina is a pro. Dina and I go back a few years. Thank you guys. See you. And I'll tell you what. Give me a call. I will miss your call. Or don't drop me a message because I won't be able to type so many messages. Tomorrow evening. Tomorrow is Thursday, na? Yeah. I will be in the car. I'll say tomorrow IST 4 o'clock I will be out in the car. So give me calls between 4 and 5 if you have any questions. मैं बीच में आपको जवाब दूंगा जरूर. अच्छा, just one more. How many times can I have this? What? Having just ज़्यादा don't force yourself. Go with the taste buds. When you're having a salad, और सैलेड मन कर रहा है थोड़ा नमक डालने का तो डाल लो. and still no dairy products, no dahi. No, बिल्कुल no. Okay. Zero. Okay. Only salad, raw salads, fruits, कच्चे सब्जी, पके फल और जूस. अच्छा, जूस को छानना नहीं है अब कल से. ठीक है. Because when you're having raw, you need fiber. So no more straining. Okay. Thank you so much. Solid cleanse happening. Good luck.
Yeah. So, Acha, one more thing, Pankaj, Preeti, 1 second. Sorry, Preeti, one more thing. Now, when you start eating, थोड़ा अगर constipation या थोड़ा heaviness होता है, तो use castor oil in the morning. Castor Okay. oil के 3 चम्मच, गर्म पानी के ऊपर सब्जी फल खा लो, तो सब निकल जाएगा एकदम. ठीक है. बट कैस्टर ऑयल लेने के बाद 2 घंटे तक घर से नहीं जाना. ठीक है. अच्छा वो बता All of दिए. you. ठीक All है. of you. Okay. चलो next. Sorry, who's this? Pankaj, sorry, एक question था. Deepak is traveling actually right now. He's on the call. He started raw since yesterday, little bit. Deepak. Yeah. So he can eat steamed or roasted, right? Yes. Okay. और उनको भी strain नहीं करना है juice? नहीं, strain मत करो. If you're eating something, never strain. Fiber is very important. Only when you're juice strain नहीं करना है उनके लिए. नहीं करना. With fiber पीना है. गाढ़ा जूस पीना है ताकि फाइबर पेट में जाए. अच्छा. Okay. Steamed vegetables or boiled vegetables are as good as raw. And roasted? No, not really. Roasted, no, as good as raw. थोड़ा बहुत रोस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. Thank you. Thanks a lot. बट वो जो जूसर से निकलता है जूस वो तो ऑलरेडी स्ट्रेन होके निकलता है. तो यू आर टेलिंग मी टू पुट द फाइबर बैक. नो. हम डबल स्ट्रेन करते हैं. जो जूसर से जूस निकलता है, निकलने के बाद छानते हैं उसको. ओके. ताकि और लाइट हो जाए. अब आपने छाना नहीं तो कोई बात नहीं. डोंट गेट स्ट्रेस कि मैंने बिना छना हुआ पी लिया, आप जिंदगी बर्बाद हो गई. ऐसा कुछ नहीं है. कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं पर पंकज भाई कोल्ड प्रेस में तो छान के ही निकलता है ना वो. ना, उसमें फिर भी फाइबर होता है थोड़ा थोड़ा. तो कोल्ड प्रेस को भी हम छानते हैं. अच्छा तो ये चलेगा, कोल्ड प्रेस वाला चलेगा ना. हाँ चले. ये तो कह रहा हूँ कि जो अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसको और मत छानो. और अगर आप बिल्कुल प्लेन जूसिंग पे हो तो उसको छानो ताकि बॉडी में बिल्कुल भी फाइबर ना जाए. अगर बिल्कुल भी फाइबर नहीं जाएगा तो बॉडी एकदम बिल्कुल तड़प जाएगी, अंदर से खाली रहेगी. जितना खाली रहेगी उतना ज्यादा ऑटोफेजी होगा, उतना ज्यादा इंटेस्टाइन साफ होंगे. ओके. आप समझो मैं समझाता हूँ. जब हम जूस फास्ट कर रहे होते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं. वी आर फास्टिंग. करेक्ट. जूस सिर्फ एक बहाना है अपने मन को बहलाने का कि पेट में कुछ जा रहा है. ओके. और उसको छानते इसलिए ताकि पेट में कुछ जाए ना. और जूस से नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि जूस में जो विटामिन होते हैं बॉडी ऑब्जॉर्ब कर लेती है, तो उससे फायदा होता है. दूसरी बात, जैसे बॉडी में जितना जूस जाता है वो सारा का सारा यूरिन में पास नहीं होता, कुछ ना कुछ रिजेक्ट हो जाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो सफाई में आसानी हो जाती है. ओके. अंडरस्टैंड. लेकिन अगर आप कुछ खा रहे हो, इफ यू आर ईटिंग, देन नेवर फिल्टर द जूस. जितना गाढ़ा उतना अच्छा. ओके. ठीक है जी. ओके. थैंक यू. See you guys. We meet on Saturday. Thank you. See you. Cheers, Safe take travels, care, good Pankaj. luck. Safe travels. Have a No, good I'm day. going for a party now. Bye. Have a good party. Bye. Thank you. Enjoy. Bye bye. Thank you. Bye. Thank you.